Hello, good morning students. So welcome back on my YouTube channel Math Mentor. Today I am going to start the next exercise, that is miscellaneous exercise of the same topic, binomial distribution. We have already completed the single exercise of the topic, that is 8.1 exercise. All example we are already done. So let us see the miscellaneous exercise. In first two example I already skip here, that is the MCQs and simple two examples. That is on the expected value and the variance we have already taken in the exercise. So example number 3rd, example number 4th, example number 5th, these are the word based examples we will take as it is in this video lecture. So in the 3rd example, read the example carefully. If a fair coin is tossed 10 times, so fair coin is tossed 10 times means n is equal to 10, and the probability that it shows heads. So we have to write the x is equal to number of heads and p is the probability of getting number of heads, getting heads. So we know that head and tail probability are equal, that is p is equal to 1 by 2. So obviously q is equal to what? 1 by 2. So here we have to find the first x is equal to 5 times, and in the first 4 tosses, means x is equal to 4, and tail in the last 6 tosses. So obviously 10 times coin toss किया तो पहले 4 अगर हेड है तो लास्ट 6 obviously टेली होंगे, बिकॉज 4 हेड है तो बाकी 6 तो टेली होंगे. बट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? फर्स्ट 4 टॉसेस, दैट इज x इज इक्वल टू 4. So let us see the solution of example number 3rd. This is the solution of example number 3rd. Let x number of heads, p probability of getting heads. So which is p is equal to 1 by 2, q is equal to 1 by 2, and n is equal to 10, which is given. So 10 times coin toss करना है तो n is equal to 10 होगा. ये example cannot be solved by probability distribution because n is equal to 10 है. So that number of sample space becomes 2 raised to 10. So 2 raised to 10 is 1024. It is very difficult, very critical to solve such examples. So best way we can solve by the regular binomial distribution procedure. Okay. So x follows binomial distribution with the 2 parameters n comma p. So x follows b. So this first position is n is equal to 10, p is equal to 1 by 2. Then probability mass function of x is probability x is equal to x, ncx into p raised to x into q raised to n minus x. So here n is a 10 cx 1 by 2 raised to x 1 by 2 raised to 10 minus x. So this is a probability x is equal to x. X takes the value 0 to 10. Now here first we have to find exactly 5 times. Question number first, we have to find the probability exactly 5 times. So here this is equal to probability x is equal to 5. Probability x is equal to 5 means 10c5. 10c5 1 by 2 raised to 5. 1 by 2 raised to 10 minus 5. Got it? अभी सब प्रोसीजर आपको 100% अंडरस्टैंड हुई बिकॉज वी आर ऑलरेडी टेकन 12 एग्जाम्पल्स. अभी ये सब प्रैक्टिस चालू है. सो 10c5 तो 10 माइनस 5 अगेन 5 बन जाएगा. तो 10 को 5 टाइम्स डिक्रीज करना है. 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 टाइम्स. और नीचे 1 2 3 4 5. This is a procedure to solve the of examples on NCR. So actually NCR का फॉर्मूला है, that is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. बट हम सॉल्व करेंगे दिस शॉर्टकट मेथड. 10c5 तो 10 को 5 बार
कम रिड्यूस करना है 5 टाइम्स, 10, 9, 8, 7, 6, ये 5 बार हुआ। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो नीचे 5 है तो 1 to 5 मल्टीप्लाई करना है, 1, 2, 3, 4, 5। So it is a 10 minus 5 is 5, 5 plus 5 is 10, so it is a 2 to the power 10, 1 by 2 raised to 10। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो 5 to 10, 3, 3, 9, 4 to 8, 6, 6 are 36, 36 into 7 into 1 by 2 raised to 10, which is equal to 7, 6 are 42, 21 plus 4, 25, 252 divided by 1024। तो इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं प्रैक्टिकली। हम ये शायद 4 टाइम्स नहीं तो 4 टाइम्स होगा, 4 2 8 नहीं, ठीक है। ऐसा रखो, आप कैलकुलेशन करो। एग्जाम्पल नंबर 2, यू कैन रिड्यूस दिस, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इन द फर्स्ट 4 टॉसेस एंड टेल इन द लास्ट 6 टॉसेस। सो राइट इन द ब्रैकेट, ये पूरा लाइन इसमें लिखो, द फर्स्ट 4 टॉसेस, the first 4 tosses and tail in the last 6 tosses। So ये ऑब्वियस थिंग है, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे x की, बिकॉज x इज डिफाइंड द नंबर ऑफ हेड्स। सो अगर पहले 4 हेड है तो ऑब्वियसली 6 क्या होंगे, टेल ही होंगे, बिकॉज वी कॉइन टॉस 10 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4। तो सेम अगेन 10 C4, 1 by 2 raised to 4, 1 by 2 raised to 10 minus 4, 6, 10, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 1 by 2 raised to 10, 1 by 2 raised to 10, 4, 2, 8, 3, 3, 9, 7, 3 are 21 into 10 divided by 1024। इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो, आप रिड्यूस करो, दिस इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, ये भी आप रिड्यूस करो। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। ये तो सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ये देखो, ये एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया। आप 4th नंबर ट्राई करेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब विल हिट अ टारगेट ये 0.8, हिटिंग का टारगेट दिया है 0.8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बॉम्ब्स, सो नंबर ऑफ बॉम्ब्स कितने हैं, 10 है, और हिटिंग प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.8 है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, एग्जैक्टली 2 विल मिस द टारगेट। हमें प्रोबेबिलिटी दी है हिटिंग की और फाइंड करने की मिसिंग की। वी हैव टू फाइंड एग्जैक्टली 2 मिस द टारगेट। एग्जैक्टली 2 मिस द टारगेट मीन्स अगर 2 से टारगेट मिस हुआ है तो कितने हिट हुआ है, 8। सो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 8 हमें फाइंड करना है, बिकॉज 8 हिट द टारगेट मीन्स 2 मिस द टारगेट, सो इट इज टू बी सेम। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल नंबर 4। In example number 4, the probability that a bomb will be hit the target, it is 0.2. So let x is equal to number of bombs. Number of bombs. Number of bombs. So probability
probability of hitting a target, that is 0.8. ये 0.8 है तो P इज इक्वल टू 8/10. 8/10 मीन्स 4/5. अगर P 4/5 है तो Q कितना होगा? 1/5 होगा. 4/5 प्लस 1/5 1 आना चाहिए. Q आप फाइंड करो. N कितना है? कितने बॉम्ब है? 10 बॉम्ब है. N इज इक्वल टू 10. So N is equal to 10, P is equal to 4/5. Just filling the blanks. 10 CX, P is 4/5, Q is 1/5. X takes the value 0, 1, 2 up to 10. बाकी सिंपल है. Here we have to find probability exactly to miss the target. Exactly to miss the targets. Therefore, P is equal to exactly 8 hit the target. Hit the target. अगर 2 मिस हुए तो कितने हिट हुए? ऑब्वियसली 8 हिट हुए, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ बॉम्ब्स इज हाउ मच? 10. सो हमें एग्जैक्टली 8 हिट द टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 10 C8, 4/5 raised to 8, 1/5 raised to 10 minus 8 is 2. अब 10 C8 को हम 10 C2 लिख सकते हैं. ये फॉर्मूला है. NCR इज इक्वल टू N माइनस R. 4 raised to 8 divided 5 raised to 10. So this is 10 into 9 divided by 1 into 2, 4 raised to 8, 5 raised to 10. 45 into 4 raised to 8 divided by 5 raised to 10. So this is the probability x is equal to 8. To miss the target means obviously 8 hit the target. Okay. So this is the solution of example number 3rd. Okay. अब सब सेम टाइप के एग्जाम्पल है. Let us see the example number 5. Read the example number 5. पहले उसको रीड करो, 1-2 बार रीड करो. आपको भी जजमेंट आएगा कि x is what and p is what. The probability that a mountain bike traveling along a certain track will have a tire burst. So tire burst की probability है. $17 riders. So important x number of tire burst. The probability that a mountain bike traveling along a certain track will have a tire burst is 0.05. Find the probability that among 17 riders, 17 riders है, 17 riders means 17 बाइक के उसके टायर्स. So here probability that a mountain bike traveling along a certain track will have a tire burst. Will have a tire burst. Burst means फूट जाना. So it is 0.05. 0.05. 5/100. So 5/100 means 1/20. Q is 19/20. N is equal to 17. अब ये कैलकुलेशन है. 0.05 को 5/100 कर सकते हैं. 5/100 को 1/20 करेंगे.
ये P1/20 हो गया. सो Q कितना होगा? 20 minus 1 is 19/20. सो इट इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. सो N तो 17 है, P1/20 है. गॉट इट? सो N is 17, P is 1/20, Q is 19/20. It is 17 minus X. Okay. Now one by one question. Exactly one has a burst tire. Rider, exactly one has burst the tire. So we have to find the probability. Exactly one has burst the tire. Means we have to find probability X is equal to 1. It's a 17C1 1/20 raised to 1, 19/20 raised to 17 minus 1, 16. 17 into 19 raised to 16 divided by 20 raised to 17. 20 raised to 1, 20 raised to 16, 1 plus 16, 17. So this is answer. Don't simplify this. अगर उन्होंने कुछ वैल्यू दी है इसकी अगर वैल्यू गिवन है, so we can write directly. This is example number first. Now about second. 3 एग्जाम्पल है. At most 3 have a burst tire. At most 3. Probability of at most 3 have a tire burst. Burst tire. Burst tire. At most 3 means X is less than or equal to 3. ज़्यादा से ज़्यादा 3. 3 से कम ही होना. 3, 2, 1, 0. So this is probability X is equal to 0 plus probability X is equal to 1 plus probability X is equal to 2 plus probability X is equal to 3. Okay. So 1 by 1 0. एक बार X की जगह पे 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है. It is a part of calculation. 17C0 1/20 raised to 0, 19/20 raised to 17 minus 0 is 17, plus 17C1 1/20 raised to 1, 19/20 raised to 17 minus 1, 16, plus 17C2 1/20 raised to 2, 19/20 raised to 17 minus 2 is 15. 17C3 1/20 raised to 3, 19/20 raised to 17 minus 3, 14. अब try to first taking common term here. यहाँ पर 19 raised to 17 है, 19 raised to 16 है, 19 raised to 15 है, 19 raised to 14 है. So 19 raised to 14 common निकालो. 20 raised to 17, 20 raised to 17, 20 raised to 17, 20 raised to 17 common. So here 19 raised to 4 and 20 raised to 17 that will be common. बाकी सम ब्रैकेट में लिखो और उसका कैलकुलेशन करो. सो ये आपको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. ये सेकंड नंबर का कैलकुलेशन आप क्लियर करो. सो कौन सा भी कैलकुलेशन करना है तो पहले कॉमन टर्म निकालो, जो पॉसिबल है वो कॉमन टर्म निकालो. सो यू विल गेट द मोस्ट इजी कैलकुलेशन. ओके. सो दिस इज द एग्जांपल नंबर सेकंड. नाउ थर्ड. 2 or more have burst tire. Probability 2 or more burst tire. More have burst tire. 2 और 2 से ज्यादा. X is greater than or equal to 2. So greater 2 or more means what? 2 or greater than or equal to 2. So यहाँ X takes the values 0 to 17. 0, 1, 2, 3 up to 17. 2 और 2 से ज्यादा इतना फाइंड करने से बेस्ट क्या है? 1 माइनस
probability of x is equal to 0 plus probability x is equal to what? 1. x is greater than or equal to 2, 2 और 2 से ज़्यादा, 2 और more than 2, इतना फाइंड करना है. सो इससे बेस्ड क्या है? 1 माइनस सम ऑफ दिस 2, 1 माइनस probability x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1. Why 1 minus? Because sum of all these probability is how much? 1. Because this is a probability mass function. Okay. So this is 1 minus 17C0, 1 by 20 raised to 0, 19 by 20 raised to 17 plus bracket करो plus 17C1, 1 by 20 raised to 1, 19 by 20 raised to 16. वही प्रोसीजर से आप इसको कॉमन निकालो. ठीक है. सो इधर यहाँ पे 19 by 17, 20 by 17, 19 by 16, 20 by 17. सो बेस्ट वे क्या कॉमन लेना यहाँ पर? 19 raised to 16 divided by 20 raised to 17 in bracket 1 1. 19 यहाँ पे 19 रहेगा, 1 into 19 19, क्योंकि मैंने 16 कॉमन लिया, 19 raised to 16 कॉमन लिया तो यहाँ पे 19 बचेगा. दिस इज 17, दिस इज 17. 19 raised to 16, 20 raised to 17 तो कॉमन लिया है. 19 plus 17, it is a 20, 36 I think. 9 plus 7, हाँ 36. So what will be answer? 1 minus 36 into 19 raised to 16, 20 raised to 17. तो आप कैलकुलेशन पे ध्यान दे दो. यही लास्ट स्टेप का आपका जो फिगर है वो अगर एक्यूरेट आएगी तभी आपको आंसर फुल मार्क्स मिलेंगे. बट दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल नंबर अपना 5 था, 4th था एग्जाम्पल नंबर 5. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3rd, 4th एंड 5th. ओके. सो विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो कॉपी इट एंड देखो सब एग्जाम्पल सेम टाइप के. अब सिर्फ प्रैक्टिस चालू है हमारी. इस टॉपिक का कोई भी मार्क, सिंगल मार्क भी आपका नहीं जाना चाहिए. इज इट क्लियर? सो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Let us see the example number 6. In example number 6, he has given the probability that a lamp in a classroom will be burned out. Burn out में जल जाना is 0.3. 6 such lamps are fitted in the classroom, means n is equal to 6. Probability of lamp burn out in a class is 0.3. सो 0.3 को हम 3/10 करेंगे. P अगर 3/10 है तो Q डेफिनेटली 7/10 आएगा. PQ हो गया, N भी हो गया. देन व्हाट इज आवर क्वेश्चन? व्हाट इज X? इफ इट इज नोन दैट द क्लासरूम इज अनयूजेबल इफ नंबर ऑफ लैम्प्स बर्निंग इन इट इज लेस देन 4. अगर लेस देन 4 लैम्प बर्न आउट है तो क्लास इज अनयूजेबल. So we have to find the probability that the classroom cannot be used. Means cannot be used. अगर classroom unusable है तो कितनी लैम्प बर्न आउट होना चाहिए? Less than 4. Means we have to find probability x is less than 4. Simple question है. ये जो स्टोरी है आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए. वो अंडरस्टैंड होने के बाद आपको P, Q, N सब दिखाई देगा और x क्या फाइंड करना है वो समझ में आएगा. ओके. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 6. यहाँ से solution of example number 6. X number of burned lamp BURNT in a classroom. P probability of a lamp
in a classroom will burn out which is 0.3. Therefore P is equal to 3 by 10. So obviously Q is equal to 7 by 10. N is equal to कितना सैंपल है? 6 such lamps are fitted. X is equal to N is equal to 6. So now X follows binomial distribution with the two parameters NP. X follows binomial distribution. N is equal to 6. P is equal to 3 by 10. So this is the fixed position of M and this is fixed position of P. So then probability mass function of X is probability X is equal to X is equal to NCX into P raised to X into Q raised to N minus X. So here probability X is equal to X which is equal to 6CX 3 by 10 raised to X. Q is 7 by 10 raised to 6 minus X. For X is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now question is what? We have to find the probability that the classroom cannot be used. The classroom cannot be used. When the classroom is cannot be used, when such less than 4 bulbs lamps are burning. यहाँ पे दिया हुआ if number of lamps burning in it is less than 4. So we have to find probability X is less than 4. So probability X is less than 4 which is equal to 0, 1, 2 and 3. Less than, clearly mention less than, strictly less than means not including 4. 4 उसमें नहीं आना चाहिए. Less than 4 अगर है तो that classroom is unusable. So question is on the same. Classroom cannot be used. Cannot be used means unusable. So this is equal to 6C0 3 by 10 raised to 0 7 by 10 raised to 6 6C1 3 by 10 raised to 1 7 by 10 raised to 5 6C2 3 by 10 raised to 2 7 by 10 raised to 6 minus 2 4 plus 6C3 3 by 10 raised to 3 7 by 10 raised to again 3. Now there is a certain skill for this calculation. So here immediately taking some factor which should be the common here. 7 raised to 6, 7 raised to 5, 7 raised to 4, 7 raised to 3. So 7 raised to 3 common divided by 10 raised to 6, 10 raised to 6, 10 raised to 6, 10 raised to 6. 10 cube 6, 10 square 10 raised to 4 6, 10 raised to 1, 10 raised to 5 6. So here 10 raised to 6 common. So write in bracket 6C0 6C0 is 1. ये एक स्टेप यहाँ पर ऐड करेंगे इनटू, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे 6C0 is 1 7 cube is there plus 6C1 is 6 7 raised to 5 7 cube निकाला 7 square 6C2 6 into 5 6 into 5 divided by 1 into 2. It is into not 1.2 not 6.5. So remember this. So 7 raised to 4 यहाँ पर एक 7 रहेगा क्योंकि 7 क्यूब निकाला है कॉमन. 6 5 4 1 2 3
7 3 है यहाँ पर, 3 raised to 0 1, 3 raised to 1 3, यहाँ पर एक 3 रहेगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर 3 क्यूब रहेगा, 3 into 3, 1 into, ये तो करेक्ट है 1, यहाँ पर 3 रहेगा, 6 into 3, यहाँ पर भी एक 3 स्क्वायर रहेगा, मिसिंग, 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर कैसे यार, हाँ 7 क्यूब, 7 स्क्वायर, यहाँ पर 6 7, यहाँ पर 3 क्यूब रह गया, ब्लंडर मिस्टेक, ये 1 है, ये 3 यहाँ पर 3 स्क्वायर, यहाँ पर 3 क्यूब, because we taking only 7 raised to 3 common, got it. Now here 7 cube 10 to the power 6 in bracket, 7 cube कितना आता है, 49 3 जा, 49 7 जा, $343 plus 2 3 cube into 5, 27, 3 square 3 cube 27, 7 5 to 35 plus 3 2 are 6, अब ये सब कैलकुलेशन करो, अब 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, ये सब के एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन सब के एडिशन करो, राइट इन ब्रैकेट, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, सो I will never focus on the calculation, I focus on the name of the topic, binomial distribution, उसकी theory. Okay, so ये बाकी सब आप पार्ट करो, this is a part of simple calculation. यहाँ पर multiplication addition है, ये definitely आपको आएगा. So this will be the last step of the solution of example number 6. Find the probability that the classroom cannot be used. When classroom cannot be used, when it is a less than 4 bulbs are burned out, less than 4, exceeds the number of burn out lamps in a classroom. So this is the solution. Okay, so this is example number 3 4 5 and 6. ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिए ऑफ एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज. ओके, so from tomorrow we'll continue from the next example number 7. So this is the sufficient study for the today's video lecture. We will stop here. Thank you very much.